Well, students, in this part of the unit, you will learn about another important topic, that is solenoid. You have studied that magnetic field is produced in a conductor when electric current passes through it. You also studied the magnetic field due to a current carrying circular loop. So, solenoid is a device which produces magnetic field, that is also uniform magnetic fields, inside it. Up to a greater length of the solenoid, we get uniform and strong magnetic field. That device is called solenoid. How it is formed? Solenoid is a cylindrical shaped structure. It is made up of closely wound circular loops of insulated conducting wire. Insulated conducting wires, if these are wound closely in the form of a helical spring or a cylinder, that structure is called solenoid. Let us draw its diagram. So the direction of flow of current is like this. If we take one such loop of this solenoid, we can understand it in a better way. This is one such loop of a solenoid. A number of turns are closely wound. This material is conducting wire. This is a conducting wire and insulated one. So direction of flow of current is clockwise through it. So through one such turn, what is the magnetic field? Because of one loop, this is the direction of magnetic field. Now two such loops we will take. One loop is this and the direction of flow of current is clockwise. So from this side, magnetic field lines are entering and coming out in the form of circular loops like this. Magnetic field lines are there and one such turn we will take here. ये दूसरा टर्न है. एक टर्न यहाँ पर आपने लिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, सेंटर पर along the axis of this turn of this loop magnetic field is there और बाहर को इस तरह से आ रहा है. और यहाँ पर जो लूप है उसमें भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. तो उसमें जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है. आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रहा है और यहाँ पर यहाँ से अंदर को आ रहा है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड will cancel out this magnetic field. This magnetic field which is entering into this turn will cancel out this magnetic field because of this turn which is leaving this turn. So outside this coil, outside this solenoid, the magnetic field will be very weak. But as far as the center of this solenoid is concerned, magnetic field due to one turn will be added up with the magnetic field due to second turn and with all the turns. So there will be a strong magnetic field produced inside the solenoid, whereas outside the solenoid magnetic field will be almost negligible or very weak magnetic field. Once again try to understand it. ये दो टर्न हम ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे टर्न हैं, इसमें कोई दो टर्न हम लेंगे. सपोज ये आप टर्न ले लीजिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? क्लॉकवाइज. यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे जाएंगी, इस तरह से इनकी डायरेक्शन होगी. यहाँ से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से अंदर को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप इज देयर. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर और जो बाहर आ रहा है तो बाहर को आ रहा है. इसके अलावा और भी तो बहुत सारे टर्न है. दूसरा टर्न ले लीजिए एडजेसेंट टू दिस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको लीव कर रहा था वो तो उसको कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल करेगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. लेकिन जो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है और इसका कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द एक्सिस, बोथ विल बी एडेड. So likely all the loops will be contributing in magnetic field along its axis. तो इसको अगर आप दिखाना चाहें मैग्नेटिक फील्ड को, कैसे दिखाएंगे? So magnetic field due to this solenoid will be shown by these magnetic field lines. अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी? कौन सा एंड इस सोलेनोइड का
नॉर्थ एंड होगा और कौन सा एंड, साउथ एंड होगा। इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट ऑल्सो। तो बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, अब इसमें देखिए आप, इसमें क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन है तो जिस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो साउथ पोल होता है। वो क्या होता है, साउथ पोल। जैसे ये क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन अगर है लाइक दिस, इफ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो दिस इज रिजेंबलिंग विद एस लेटर ऑफ इंग्लिश, एस, करंट ऐसे जा रही है, तो ये साउथ पोल हो जाएगा। लेट अस सी द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ द सोलेनोइड एट अदर एंड। ये जो टर्न है लास्ट वाला, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ से क्या है, क्लॉकवाइज, तो इस तरफ से क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इट विल रिजेंबल विद द लेटर एन। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस को आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। डायरेक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, अगर करंट की डायरेक्शन में अगर आप ये फिंगर्स को टर्न करें तो दी थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉर्थ पोल आपके थंब की डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ थंब, सो नॉर्थ विल बी along this direction. Direction of magnetic field can also be understood by right hand thumb rule. जैसे एक लूप आप ले लीजिए, लास्ट वाला ही लूप लीजिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, करंट अगर आप इस तरफ से लें तो एंटी क्लॉकवाइज है और इस तरफ से लें तो क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है, तो टेंजेंट ड्रॉन बाहर को देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स और इस तरफ को आएगा, ये नॉर्थ पोल होगा। Let us understand the definition of solenoid. Once again, what is solenoid? Solenoid is a cylindrical shaped device or cylindrical shaped structure. It is made up of closely wound insulated turns of conducting wire. These are closely wound and a number of turns are there of conducting wire, and these are insulated ones. These all are not in electrical contact with each other. Each turn is isolated electrically from other turn. Current is passing through wire only, and its length is much larger than its diameter. What is the length of ideal solenoid? That is infinite, but it is not possible. Infinite length is not possible. So ideal solenoid is that solenoid whose length is much larger than its diameter. Now you will find expression for magnetic field inside the solenoid at any point P along its axis. It consists of a number of closely wound turns of insulated conducting wire, and one such turn is taken. इसमें बहुत सारे टर्न हैं. One such turn we have taken. It is located at position A, D. This is point A, this is point D, and this is point O. AOD is this ring. A, this point, you can see. O, this point, center of this ring, and D, this point. इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? इसमें करंट की डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज ली है, तो करंट ऊपर को यहाँ से जा रही है इस एंड से, तो इसलिए आपने इसको कैसे दिखाया है, डॉट से दिखाया है। और इस एंड से अंदर को जा रही है इस सर्कुलर लूप में, तो इसको आप किससे दिखाएंगे, इसको आप किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। सो वन सच लूप इज देयर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P along its axis at a distance x, this distance is x, from its center O is given by the expression. What is that expression? ये एक रिंग है, इसका सेंटर O है, इसका रेडियस A है, इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर आपको करंट एलिमेंट IDL से, I इसमें करंट फ्लो हो रही है, IDL से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट P पर, ये आपको निकालना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक, इट इज जस्ट टू रिकैपिचुलेट हियर। Its direction will be
like this angle is theta, this angle will also be theta, this is dB sin theta. इस dB sin theta को अगर आप इंटीग्रेट करें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एक रिंग से जिसमें करंट फ्लो हो रही है, कहाँ पर, P पॉइंट पर, जिसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से x है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन रिंग. अब हमें पूरे सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर. उसे आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx थिकनेस का along the length of this solenoid. dx is the thickness of the small element along the length of the solenoid. तो dx में कितने टर्न्स होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx length of the solenoid कितने होंगे? इज इक्वल टू थिकनेस कितनी है, dx. अगर हमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी गई हो इस सोलिनॉइड के, तब आप n इंटू dx कह सकते हैं. n इज वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड. तो n इंटू डी एक्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ. और हर एक टर्न से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट इज फ्लोइंग. तो इस B को हम dx के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो इस सोलिनॉइड के dx पार्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी dB इज इक्वल टू हाउ मच, dB कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न into number of turns in dx length, that is mu naught and कितने टर्न्स हैं, n into dx. एक टर्न में कितनी करंट है, I into a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. This is not very difficult to understand. dB is the magnetic field at point P due to dx thickness of this solenoid, right? Now what can we do? Here variable is dx. If we want variable in terms of theta, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, टेक ट्रायंगल APO. ट्रायंगल APO आप लीजिए. इस ट्रायंगल में यहां पर देखिए ये एंगल थीटा है. थीटा एंगल क्या है, P को A पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है, जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का A के रिस्पेक्ट में, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. किसके साथ, इस एक्सिस के साथ. तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा इन ट्रायंगल APO, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, radius of this solenoid A. What is base here, x. तो x यहां से क्या मिलेगा आपको, x is equal to A by tan theta. 1 by tan theta is equal to cot theta. This is equal to A cot theta. x आ गया. अब इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे x को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल मैथमेटिक्स इसमें डिफरेंशिएशन की अप्लाई होगी. दैट इज dx बाई डी थीटा. इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको बाहर ले लीजिए. डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा, इट इज अ फॉर्मूला, इट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड, इट कैन इजीली बी proved that this is equal to minus cosec square theta. Differentiation of cot theta is equal to
minus cosec square theta is equal to minus a cosec square theta. This is the expression of dx is equal to इतना इंटू डी थीटा. अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा है और दूसरा dx इज इक्वल टू माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा है. पुट अप द वैल्यूज ऑफ x and dx in this expression. What will you get? Let us see. We will get dB is equal to mu naught n I a square into dx. dx is minus a cosec square theta d theta by 2 within bracket x square. x is a cot theta. a square cot square theta plus a square whole to the power 3 by 2. This is equal to mu naught n I. A will be multiplying with a square. This will give us a cube. This minus sign will come out. Cosec square theta d theta by how much? This is 2 times a square can be taken common. A square to the power 3 by 2 will make it a cube. When it will come out of this bracket, a square will become a cube. Within the bracket, cot square theta plus 1 whole to the power 3 by 2. This is equal to mu naught n I a cube cosec square theta d theta by 2a cube. And what is 1 plus cot square theta? 1 plus cot square theta is cosec square theta. Cosec square theta to the power 3 by 2. This will give us cosec cube theta. What will you get? You will get cosec cube theta. Now this cosec square theta term will cancel its 2 powers and a minus sign is of course there. So you will get as a final expression dB is equal to minus mu naught n I. This a cube will cancel this a cube. 1 by this is cosec theta 2 cosec theta d theta. This much you will get is equal to minus mu naught n I sin theta d theta by 2. 1 by cosec theta is sin theta. This is dB. What is dB? Magnetic field. Where? At point P. Because of this strip dx of this solenoid. अब हम अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पर निकालना चाहें ड्यू टू एंटायर लेंथ ऑफ दिस सोलिनॉइड, देन वी विल हैव टू इंटीग्रेट इट एज वी यूजुअली डू इन अदर cases also. So magnetic field B at point P due to entire length of the solenoid will be given by B is equal to integration of dB is equal to integration of dB is minus sign can be taken out mu naught n I sin theta d theta by 2. This is and it's a limit theta varying from theta 1 left hand of the solenoid with respect to this point P and theta 2. Theta 2 is right hand. Theta 2 is this angle. If we connect this point P with the right end of the solenoid, the angle subtended at point P by line joining this end with this point P is theta 2. Similarly, the angle subtended at point P by the line joining point P with the left end of the solenoid with the axis of the solenoid is theta 1. तो आप theta 1 से theta 2 तक वेरी करेंगे किसे? लिमिट को. This is varying from theta 1 to theta 2. As both the angles are measured along same direction, so both are positive. Both are taken as positive.
So is equal to, B is equal to minus mu naught constant taken out, n can be taken out, I can be taken out, by 2 can also be taken out, integration of sin theta d theta varying limit from theta 1 to theta 2. This will give you B is equal to minus mu naught ni by 2, integration of sin theta is minus cos theta, limit varying from theta 1 to theta 2 is equal to minus mu naught ni by 2. This minus sign can again be taken out, minus minus, this will become plus. Now it will be cos theta 2 minus cos theta 1. Firstly vary upper limit, then you vary lower limit. This will be the expression for magnetic field, where at point P due to entire length of this solenoid. In case of solenoid, the length is much larger than its diameter. So this angle theta 1, in case of ideal solenoid, this theta 1 will tend to 180 degree. Theta 1 is nearly 180 degree. And this theta 2, which will tend towards 0. With increasing length of solenoid, theta 2 will tend towards 0 and this theta 1 will tend towards 180 degree. So theta 1 can be replaced by 180 degree and theta 2 by 0 degree. If we put up these values of theta 1 and theta 2 in above expression, you will get B is equal to mu naught ni by 2 times cos theta 2. Theta 2 is 0 degree, cos 0 degree minus cos theta 1. Theta 1 is 180 degree. So this will give us B is equal to mu naught ni by 2 cos 0, that is 1, minus cos 180, that is minus 1, minus minus plus, so 1 plus 1. So B is equal to mu naught ni by 2 into 2. This 2 will cancel this 2. So finally we are getting B is equal to mu naught ni as the magnetic field inside the solenoid. Magnetic field inside the solenoid. And this is uniform for very long range. Its value becomes a half at the ends. Let us see that. So we have got B is equal to mu naught ni by 2 times cos theta 2 minus cos theta 1. It is the general expression for magnetic field inside the solenoid. कोई पॉइंट अगर एंड पर हो, चाहे वो लेफ्ट एंड हो, ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर हो सपोज, या यहाँ पर हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सपोज लेफ्ट एंड में है तो लेफ्ट एंड में थीटा 1 कितना हो जाएगा? अगर पी पॉइंट यहाँ है तो थीटा 1 विल बी 90 डिग्री और थीटा 2 कितना होगा? यहाँ से थीटा 2 विल बी 0 डिग्री. So what will be value of this? Value of this expression will be B is equal to mu naught ni by 2 times cos theta 2, that is cos 0, minus cos theta 1, that is cos 90. Cos 90 0. This is mu naught ni by 2. Magnetic field will be this. ये केस कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड फ्री स्पेस में रखा है. इफ देयर इज सम मीडियम इनसाइड दिस सोलिनॉइड, कोई आयरन कोर हमने अगर इंसर्ट कर रखी है, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया था B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उस केस में? B इज इक्वल टू म्यू एन आई. इन दैट केस इट विल बी वेयर म्यू इज permeability of that medium in which this solenoid is placed, or inside the solenoid the core is placed in the form of soft iron, then its permeability will change. This expression will be modified as B is equal to mu n I. This is all about this topic. Thank you.